Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, before starting today's chapter, which one is a new chapter of our computer textbook? Okay, so before that one, I want to ask you about last chapter, which was animating text and object. I hope you get that point. Easily and nicely, and you all do that practical by yourself. Yes or no? You did it? Okay. If you're not done, then do it one time, all topics practically by yourself in your desktop, in your laptop, or in your phone. Okay, so let's begin our chapter number 6, which is Microsoft Excel 2010, and here is a part 1 of this chapter. So in this session, I'm going to explain you about features of Excel. Before that, I will tell you about what is Excel, because this one Excel is a new topic for you all. Okay, because in the 5th standard you not learn this Excel. Okay, so first of all I am going to tell you about what is Excel. Then afterward I will tell you about features of Excel. Then what is a workbook and worksheet in Excel, and this way we will get all theoretical topic about Excel in this video. So let's begin with what is Excel. So Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. It is widely used to perform mathematical calculation. The data is spread in a tabular form, means that Excel में क्या होता है, टेबल होता है. ओके, एंड जो मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है. It is spread in a tabular form consisting of rows and column. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पावर पॉइंट में आपने टेबल क्रिएट किया था, राइट? तो टेबल क्या कंटेन करता है? सेल्स एंड रोज, जो हमें खुद से ड्रॉ करनी पड़ती है, राइट? बट इन एक्सेल इट इज़ ऑलरेडी इनबिल्ट, मीन्स एनी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज you want, you will get it in Excel and no need to draw it. Okay, it provides inbuilt features tools such as formulas, functions and data analysis tool that make it easier to work with large amount of data. So this is the use of Excel. Mostly it is used to create tabular forms data, for writing tabular forms data, for creating mark sheet, for analyzing data, for analyzing analyzing interest and everything, business, regarding business purpose, regarding educational purpose, Excel is used. Clear everyone? So let's begin with features of Excel. There are so many features of Excel, so let's begin with the first one. What is the first feature? So formulas are used for performing simple and complex mathematical calculation. जो मैंने पहले ही आपको Excel की definition में बताया, right? क्यों यूज़ होता है? For performing simple and complex mathematical calculation, which you not have to count by your fingers or by your calculator. There are already formulas available to perform simple and complex calculation. Okay, so next feature is functions are built-in formulas. This one, function, is the next feature of Excel. Which one? Inbuilt formulas used for calculating percentage, means if you want to find out percentage, you not have to calculate it with a calculator or with your finger. You just have to use function, then you will get percentage, interest, average, etc. very easily. Clear? Now next topic, next feature is formatting features improve the appearance of data. It means that by applying formatting effect to data, you can create your appearance of data beautiful. Next feature is the data is automatically recalculated in the entire worksheet if any change is made in a single cell. Suppose that आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया, जैसे कि मार्कशीट में टोटल काउंटिंग, ठीक है? अब
सपोज दैट किसी स्टूडेंट के मार्क्स में चेंज हुआ, सपोज इन इंग्लिश उसके किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 65, okay, but it increased with 70, means 2 or 3 numbers increase in their marks. सो जैसे ही आप चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसके टोटल में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमें वापस से रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वन फीचर ऑफ एक्सेल. नेक्स्ट, क्विक सर्च एंड इंस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ डेटा. किसी भी डेटा को हमें रिप्लेस करना है या सर्च करना है, यू कैन सर्च इट वेरी इजीली. Clear? Now next topic, entering data in series using autofill option. Autofill option I will teach you what is it in a next chapter, but पहले मैं आपको बता देती हूँ. सपोज दैट मुझे 100 नंबर्स लिखना है, 1 to 100 मीन्स सपोज सीरियल नंबर इज़ 1 to 100. So I am not going to write down 1 2 3 4 5 till 100. What I will do, I just write down 2 numbers, select both one and drag it downside. Then you will automatically, without writing, you will get all 100 numbers without repeating any number, without forgetting any number. Okay, so you will get that data series using an autofill option very easily and without making any mistake. Next topic is next picture is data can be viewed in a graphical form such as you can create a chart. जैसे पावर पॉइंट में हमने कैसा चार्ट और टेबल्स क्रिएट किया था, राइट. सो वैसे ही एक्सेल में भी हम डेटा के थ्रू चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं विच हेल्प टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर. ओके. Now the last feature is the advanced features have made Microsoft Excel the first choice for professionals. क्यों? क्योंकि it quickly perform lengthy accounting. कितना भी लेंदी या फिर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग या कैलकुलेशन हो, इट विल गिव यू क्विक रिस्पॉन्स, क्विक कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल टास्क एंड टेक इमीडिएट डिसीजन ऑल्सो. सो दिस ऑल आर फीचर्स ऑफ Excel. I hope you all get these features. Okay. Now let's move on a next topic, which is workbook and worksheet. So first start with what is a workbook and what is a worksheet. Okay. So the Excel window that appears on the screen, जैसे ही आप Excel स्टार्ट करोगे और whole entire जो स्क्रीन है, we call it workbook. Okay. इट इज़ असाइन अ टेम्पररी नेम एज बुक 1, मीन्स जहाँ पे हम सेव करते हैं तो हमारी फाइल का नेम आता है, राइट. सो उसको उसके नेम की जगह पे क्या होगा टाइटल बार में नेम बुक 1. सो इट इज़ असाइन टेम्पररी नेम एज अ बुक 1. यू कैन चेंज इट एज पर योर चॉइस. Next topic is means what is a workbook. So workbook is like a notebook, जैसे हमारी नोटबुक होती है ना, just like that, which consists number of pages, है ना. सो नोटबुक में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वैसा ही वर्कबुक भी वैसे ही है, सेम टू सेम. वर्कबुक इज़ लाइक अ नोटबुक विच कंसिस्ट नंबर ऑफ पेजेस. सो लेट्स गो ऑन वर्कशीट. वर्कशीट is a work in a workbook are like a pages of notebook. अब नोटबुक तो हमने वर्कबुक को बना लिया, ठीक है. सो जो पेजेस है वो नोटबुक के, वो कौन है, वर्कशीट है. सो वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर लाइक अ पेजेस ऑफ अ नोटबुक. इट मीन्स दैट अ वर्कशीट is a grid like area made up of rows and columns. जैसे हम टेबल कैसा क्रिएट करते हैं इन अ पावर पॉइंट, जस्ट लाइक दैट वर्कशीट में भी रोज एंड कॉलम्स मीन्स टेबल होता है. ओके. where you can enter and work with data. This is the work of worksheet. By default an Excel workbook display 3 worksheet, मीन्स आपको बॉटम में 3 वर्कशीट्स एक वर्कबुक में मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम होता है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. You can also rename it, which I will tell you in the next coming soon videos. Okay, so this all sheets available. Even you can add any number of worksheet in a workbook. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 3 ही शीट के साथ एक वर्कबुक में काम कर सकते हो. You can create any number of worksheet in a workbook
according to the limits of memory available on your computer. ठीक है, जैसे कि I am a computer teacher and you know very well that I am taking all classes of 5, 6 and 7. Okay, so I am just going to make one workbook only which is named like a term 1 mark sheet. In that one from 5th A to 7G और 7F. ओके, जितनी भी क्लासेस है सबकी शीट एक ही वर्कबुक में क्रिएट करूँगी. अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट what we can say approximately I am creating 18 worksheet in one workbook. Okay, so it means that you can add any number of worksheet in a workbook, but what is the limit of it? That आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है. Okay, now last is a worksheet consists of 10,48,576 rows. आपको कितनी रोज़ मिलेगी? 10,48,576 रोज़ and columns 16,384 columns. Okay, so this one is workbook and worksheet. I hope you all get the basic knowledge of Excel. In the next video, I am going to tell you about components of a worksheet and in detail we will learn about that components, okay, with its figure. But first of all, you watch this video and be assured that you know everything about Excel here. Basic knowledge you have about Excel. Okay, so I will come with new topic in the next video. Till then, spread happiness and stay happy. Bye everyone.